Hi friends, it's the time for SBI PO, State Bank of India Probationary Officer exam, the biggest exam of the season. How are you feeling about it? Some fear, nervousness, some excitement, I'm sure. So this anxiety and all, that's all expected only when an exam of this magnitude happens. So yeah, that's all okay. I'm here to tell you a few very small things. There's not much to teach you at this stage. You have been through the season and you've done it well. So not much, but yes, I'll remind you 2-3 small things for this exam. First academic and then non-academic. So in academics, I'll just tell you two things, two very small bullet points that you will do well to remember. Number one would be, you cannot afford to get stuck anywhere in the paper. I keep repeating it. People still keep making the same mistake. कहीं रुकना नहीं है, कहीं पर भी अटकना नहीं है. You cannot get stuck. You do not have to stop. Keep moving in the paper. You have to look at all 100 questions. And questions means all 3 tests, everything, and then choose what to do. Stick to whatever strategies work for you, but you cannot get stuck anywhere. Remember this, take a note of it, write down a piece of paper, revise it. Do not make this mistake tomorrow, right? Number 2, there are multiple things that you've tried while you were in this journey, right? Multiple tests you have taken, real tests, mock tests and all. And there are things that have clearly worked for you. Right? There are things that have worked for you, clicked for you. And there are things that have not. No, you have made the mistakes. You have repeated those mistakes. And you are aware of your shortcomings as well. Isn't it? ऐसे होता है, सबको पता है. But what tends to happen is that though I'm sure I know about my problem, my shortcoming, my weakness, I still tend to repeat it. Why? Because that's not there in my mind consciously while I'm taking the test. My instincts take over. Right? So for example, my weakness is that I tend to get stuck in the puzzles because I love solving them, and I get stuck at a tough one, a moderately tough one, and I ruin my section. I do it a few times. For example, there's a weakness. Note it down. Make sure you don't repeat it tomorrow. You get the point? People do make this mistake. So what I want you to do is just take a small note. Just take out 5 minutes of your time. You can surely afford that. And just write down all what has worked for you. 2, 3, 4, 5 things, whatever. And those 3, 4, 5 things that have made you ruin your paper in the past. Mock tests or real exams. You'll find those points. I gave an example, right? Just write them down, revise it multiple times before the exam and even before getting into the examination hall. You do not need to remember or mug up the formula of time, speed, distance before the exam, but these things. I will not get stuck anywhere. I will not do this. I will do this. I will stick to the strategy broadly, right? Keep these 2 things in mind for academics and you're through. I do not need to teach you any grammar or maths today. No. Just keep this in mind. Don't repeat any mistakes that you've made previously and you know them. I do not want you to come out of the examination hall tomorrow and say, मैंने फिर वही गलती कर दी. You make a new mistake, I'm fine with it. कुछ नया करना, गलत करना है तो कोई पुरानी गलती repeat मत करना. बस, this is academics. We'll not talk about academics anymore. Coming to the non-academic part, now many of you are there who have been through the season. You have done reasonably well. बढ़िया किया आपने, अच्छा किया है. You are like reasonably happy with the performance. Fine. Do not start thinking about the results now. उसमें हो जाना चाहिए, उसमें नहीं हो जाना चाहिए, ये हुआ वो, कुछ नहीं. It's a new day. सब कुछ नया होने वाला है. भूल जाओ उस बात को. And if there is this feeling of boredom creeping in, exam दे के, just keep it under control for 1 more day. इसके बाद मेंस में देखते हैं. अभी के लिए stay motivated, stay excited. थोड़ा सा तो फील करो यार, बड़ा एग्जाम है. It's a huge exam. So I do not want you just to be going through the motions. एक और एग्जाम, सारे दिए, एक और दे दिया. No. थोड़ा सा एक्साइटमेंट फील करो. नर्वसनेस नहीं, एक्साइटमेंट. बड़ा एग्जाम है, फोड़ दूंगा इस बार जाके. बहुत बढ़िया तैयारी है. Everything is gone well. So this for those students who have been doing reasonably well in the season. मॉक्स में भी अच्छा कर रहे हैं, वैसे भी अच्छा कर रहे हैं. Just keep up the good work. Fine. Don't let the momentum go down. उसको कम मत होने दो. उसी एनर्जी, उसी अंथु के साथ में जाओ और एक और इम्पॉर्टेंट बड़ा एग्जाम, सबसे बड़ा एग्जाम अच्छा करना है. You have to do well in this one. This is really important. ज्वाइन करना है SBI नहीं करना है आपकी मर्जी है, बट SBI को क्रैक जरूर करना है आगे के लिए. बहुत इंपॉर्टेंट है. सो डोंट लेट स्लिप just because you're being a little complacent because you've been doing well. No, don't do that. Now come to that other set of students जो बेचारे अच्छा नहीं कर पाए अभी तक for whatever reason. कुछ ना कुछ हो जाता है, कभी कुछ खराब हो गया, कभी you are prepared but it's been like 50-50 kind of a thing. बहुत बढ़िया नहीं किया, बहुत ख़राब भी नहीं किया,
बट अभी लटके हुए हैं। रिजल्ट के बारे में आपको भी नहीं सोचना है, जो हुआ है, इवन इफ थिंग्स हैव गॉन रॉन्ग फॉर यू, दे हैव बीन लेसन्स। ऑल दीज फेलियर्स दैट हैव सीन, दे हैव बीन लेसन्स फॉर यू। कुछ ना कुछ सीखा है ना उनसे, उसी सीख को, उसी लर्निंग को कल अप्लाई करना है ना। वी गेट वाइजर बाय लर्निंग थ्रू आवर फेलियर्स, उसी को यूज़ करना है, उसी को अप्लाई करना है, एंड पक्का अच्छा होगा, बेहतर होगा, यू विल गेट बेटर। कुछ बदला नहीं है, कुछ चेंज नहीं हुआ है, कुछ आप में खराबी नहीं आ गई है बिकॉज ऑफ अ फ्यू फेलियर्स। दिस वन गुड एग्जाम विल चेंज योर परसेप्शन, योर perception about yourself and even others perception about yourself. So keep up the good work. कुछ खराब नहीं हुआ। पुजारा ने आज कितने साल के बाद सेंचुरी बनाई, देखा ना आपने, हो जाता है यार, ठीक है, you're there when you've been seeing all this through the world in different spheres, all this is acceptable. कुछ नहीं हुआ है, just believe in your ability. आप जो कर रहे थे ठीक कर रहे थे, things just did not click till now, they will click now. What's the big deal? No problem. But many of you, or at least some of you would say, sir, I'm in such a pit, I'm in such a hole, मैं इतने बड़े खड्डे पे हुआ भी कि समझ में नहीं आता कैसे निकलूँगा, क्या होगा। There have been people जो कि for no apparent fault of theirs have been like poor performers, नहीं हूँ तक ठीक हुआ, and it looks like a desperate situation. कैसे निकलें बाहर यहाँ से, क्या करें? But just remember one thing, guys, when you are in a pit, when you are in a hole, what is the only way you move? सोचो आप, just visualize you are in a you are thrown in a well. एक सूखे कुएं में आपको फेंक दिया है, you are stuck there at the bottom. क्या रास्ता है वहाँ से जाने के लिए, बताओ? नीचे थोड़ा ना जाओगे और खोद के। It's just one way to move up. Either you stay there or you move up. You cannot go any further. So there is one good thing about being in a hole, being stuck in a pit like that. फंसे होने का या बहुत ख़राब करने का या ज़मीन पे गिरे होने का, उससे नीचे नहीं जा सकते। वही स्थिति है ना। आपको बहुत सारे लोगों को लगता है इससे ख़राब क्या करूँगा, तो ठीक है, इससे ख़राब मत करो इससे ख़राब। अब क्या है, कुछ खोने के लिए तो बचा नहीं है, तो अब जो भी करोगे इससे ऊपर ही जाएगा ना। नथिंग टू लूज। वट एवर यू डू, इन विट एवर डायरेक्शन यू मूव, will take you upwards. So let's start this upward journey from this exam. इसी से स्टार्ट करते हैं ना जर्नी को। ये जर्नी नई वाली अपवर्ड मूवमेंट की इसी एग्ज़ाम से स्टार्ट करते हैं। बहुत ही बड़ा एग्ज़ाम, बहुत ही शुभ मौका है, इससे स्टार्ट करो, ऊपर बढ़ना स्टार्ट करो, एंड हु नोज़ कहाँ पर। देखो अभी तक जो हुआ है इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, इट हार्डली मेक्स अ डिफरेंस। कहाँ पर कब है, ये तो सब इंटरमीडिएट स्टेजेस हैं। आपके दोस्त ने कर लिया, आपने नहीं करा, इट्स ऑल ओके। वे यू एंड अप 15, 20, 25 years is all what's going to matter. कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है। मोटिवेटेड रखो अपने आप को, पॉजिटिव रखो। यू आर नो लेस अ ह्यूमन बीइंग देन योर फ्रेंड्स हु हैव बीन सक्सेसफुल। कुछ फ़र्क नहीं है। वन गुड एग्जाम, व्हेन यू क्लियर द प्रोसेस एंड यू विल फील एज इफ, अरे मैं तो बेकार में परेशान था। इट इज़ लाइक दैट। खड्डे में हो, निकल आओ बाहर। देयर इज जस्ट वन वे टू मूव आउट फ्रॉम अ होल, अप। स्टार्ट मूविंग अप, start from this exam. You know what, this time you've done a lot of stuff and you've thought a lot about doing this for your close ones, your parents, your close friends, your family. इनके लिए करना है, ये करना है, वो करना है। This time ना, just do it for yourself, for your own sake. You owe it to yourself. अपने लिए भी कुछ करोगे ना, बहुत मेहनत की है यार, मैन एक बार अपने लिए इस बार जाके ना फोड़ दो इसको। You deserve it. अगर ईमानदारी से मेहनत की है तो यार कैसे नहीं होगा, मतलब ऐसे नहीं हो सकता ना। पुट योर सेल्फ एट स्टेक, आप ही हो। जस्ट थिंक ऑफ इट लाइक दैट, एंड somehow generate that enthusiasm, that energy, that motivation, that positivity for this exam, कि बस कुछ रह ही ना जाए। मतलब इसमें nothing can stop me, nobody can stop me, कुछ नहीं रोक सकता, and you will do well. Stay positive, guys. It's really, really important. Fine. So I'll end it here. Eat well, sleep well, stay positive, keep yourself hydrated, that's really important. Fine. And go with all the energy and enthusiasm in this world and rock the exam.